Embracing humanity, ranging from the underprivileged people in the slums to the deprived tribal people. Touching the entire lifespan from the days-old child to the elders counting their last days. A housewife teaching the homeless, a student serving the underprivileged, a group of women helping each other to achieve independence, an orphan finding loving parents. These are all people like you and me, people around us, serving their fellow humans. Run by the local people for their neighbors, using local resources. From the remote jungles on the Indo-Myanmarese border in Manipur to the nomadic settlements in the sand dunes in Rajasthan, from the villages nestled in the snow-capped Himalayan ranges to the sleepy coastal villages of southern India, Seva Bharati has become a slow and steady metamorphosis towards humanity and growth. It is the unique story, a story of Nar Seva, Narayan Seva. Service to man is service to God. There are many corners in the huge cities where kids play in gardens full of garbage instead of flowers. These rag pickers had never been to a school or held a pencil in their hands. Today, we have hope written on their slates. They shape up dreams with a white chalk. Determined to make a better future, they go to a magical school. A school that has no doors or windows. A school that's open to all. In any of the gullies in the Pink City. The mother of this portable school is Shrimati Vimla. Around 15 years ago, Vimla started taking care of the street kids from the nearby Basti. She taught them basic etiquettes and cleanliness. Even though she's not highly educated, she started teaching them basics of all subjects.
was one of those kids. Vimla took them in her own home and took care of them like her own children. With affection and discipline, they've grown into responsible citizens. Seva Bharati supported Vimla's vision and initiative by providing all the basic requirements for the school, hostels, playgrounds, etc. तो हमारे चाचा ऐसे बोलते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, अब तो तुम घर में बैठो और तुम्हारी शादी कर देंगे फिर तुम अपने घर चले जाना। पढ़ लिख कर तुमको कोई कलेक्टर तो बनना नहीं है, ना ही हमारे समाज में अभी तो कोई बना है ऐसा बड़ा। तुमको भी नहीं बनना, तुम भी पढ़ाई छोड़ो और घर का काम करो। तुम लड़की हो, बस लड़की रहो। जो काम आदमियों के वो आदमी करेंगे, आदमी का काम है पढ़ना तो आदमी पढ़ेंगे, लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी। तो तुम बस पढ़ाई मत करो, तुम घर की चूल्हा चौका करो और उन्हीं में रह जाओगे। चाचा मेरे को तो पढ़ना है, पढ़ लिख कर मेरे को कुछ बनना है, क्योंकि मेरे को ऐसे नहीं रहना जैसे मेरे माँ बाप कर रहे सब्जी का काम, मुझे सब्जी का काम नहीं करना है, मेरे को पढ़ लिख कर कुछ बनना है। The fateful day when Mother Nature unleashed the rains on Uttarakhand. That day left a lot of debris. The scenic beauty in Uttarakhand might have recovered from the natural calamity, but the families have not. Suraj's family is one of them. पिताजी का जो जने मनावाद जो अपने बाल बच्चों तक पालना था, तो आप बच्चों पालना होता है जो होटल में नौकरी था गई था। और 16 तारीख जो की आपदा आई और ते के बाद जब पता लगी हम ताई कि वो होटल भी बोगी और होटल मालिक लोग भी सीखोगे ने कि पता नहीं चाहिए कि कब छन गौर छन पहुँचे। तो हमने काफ़ी दिन तक प्रयास करी, तो गौर में स्थिति तो अभी गरीबी हालत है, BPL श्रेणी में से पहली था। तब पिताजी खत्म हो गई, तो अब और भी तो तब तक के बाद जो कि ये एक टीम है, क्योंकि RSS वाले गोमा तो सर्वे का दौरान बताए कि अगर जो कोई बच्चा यूँ का पढ़ना चाहन हम जो चाहिए होता है पढ़ोला। तब हमन जब देखी कि तय का मामा जी जो चल रहे कि तैसे होटल वहाँ चली जाना, तो मैंने तब सोची कि एक बालक सन जो है कि मजदूरी करोना उचित नहीं। तो तैसे तो मैं फिर गोबत काशी गई हूँ और मैं तो से संपर्क करी और तो बोली कि नहीं आप बच्चा तय लिया और हम ये को एडमिशन दूला। तो एडमिशन जो है विद्या मंदिर में दिनी और तब हॉस्टल में जो है कि अभी तक बच्चा ये वो नौकरी कि मैं बिल्कुल अपनी ठीक व्यवस्था में हूँ। A lot of other kids like Suraj have also lost their loved ones in that flood. To make sure they have a better present and a good future, Seva Bharati has taken up their full responsibility. After the clouds that caused the floods, we can see the hope and spark in their eyes once again. जो हवाएं होती हैं वे धूल के कारण सेटल तौरीङाइसिदा ओजा शंकर जी मुंबई दगी नेहाना न्यूटो सोम द ओजा अम लाई खोगी पाबना जुम आई चासु असुक लई तंबसिदा माने अदोडी नंगना चाम आइन आदा लाइक तंबिगे तुम तुंगदा ngasi nongning le kanda akhoi angang taramuk si tu som deusi yaure imphal degi su amani su yaure akhoi ji pulap maharashtra de pure adigi di man hostel ji macha win haure ba akhoi ji school de pure school de admission dore school de jo akhoi ji pura anobi experience am oiki asumana mathang mathang oja sangana angang chahi khuding dum north east gi mathang sum purak pasida haujin masing yam khale hauji angang mayam gi manung sida kana gumana government service tore kana gumana NGO thab tore kana gumana social work tore
constantly works towards providing education and evolution to all the remote areas of the country. Ojha Shankar was one such member of Seva Bharati who started such an initiative few years ago in the northeast region. About 30 kilometers from the Myanmar border, there's a village called Kharsom. In 2014, when we are called a developed country, this village is not even equipped with basic necessities like electricity, paved roads, etc. But it is a well-equipped school. No child in this village is deprived of education. A small initiative from Ojha Shankar has grown manifold and become a banyan tree. Every child can make way to his dreams and have a bright future. In Odisha, there is a village called Burla, where few engineering students volunteer every week to teach these kids. They take out some time from their busy schedules and dedicate it to these children. For the betterment of these underprivileged kids, they provide all these classes free of cost. Such free coaching classes have also been started in Arunachal Pradesh, where students from prestigious institutes of India come to teach mathematics and English. Melghat is situated on the banks of Tapti River in the Vidarbha region of Maharashtra. Melghat is famous for its tiger reserves, whereas infamous for its malnutrition, illiteracy and poverty. No one is able to understand that the only solution to all the above problems is employment, by using the local resources available in abundance. Such employment will enable a source of income in almost every house, leading to constant growth and development of the household. This need was deciphered by Sunil and Nirupama Deshpande, a couple who shifted to Melghat, leaving behind their comfortable lifestyle in a metro city, to help the people in Melghat and improve their standard of living. The solution to all their problems was staring right in the face and growing in abundance all around the village: bamboo. Sunil identified the solution and created strategy out of it, and that is how he started the biggest employment opportunity for these villagers: Sampurna Bamboo Kendra. Farming loans for the tribe, self-reliant group formation, and other such social needs are all taken care of by the Bamboo Center. पहले लोगों को लगता था कि ये तो नॉर्थ ईस्ट में ही बनता है, ये तो आसाम मेघालय में ही बनता है, यहाँ कहाँ बनेगा, ये बात में कहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने बना दिया। फिर ये डिज़ाइन डेवलपमेंट का भी काम चलते रहा। अभी लगभग 150 के आसपास डिज़ाइन हम लोगों के पास हो गए हैं वो कुल मिला के। 8वीं नापास वाले के लिए सर्टिफिकेट कोर्स इन बैम्बू टेक्नोलॉजी, 10वीं पास वाले के लिए डिप्लोमा इन बैम्बू टेक्नोलॉजी और 12वीं पास वाले के लिए एसोसिएट डिग्री इन बैम्बू टेक्नोलॉजी। इग्नू ने भी इसको मान्यता दी। Those who try to cover the vastness of the mighty ocean with the thin nylon nets, those who leave their fate in the hands of the unpredictable waves while their family awaits them at the bay, those brave men are fishermen. From the beginning of the coastline to the end of the horizon, from the first light of the day till the last, they stay adrift
waiting for the sea to give them their dues in the form of fish. Almost 93% of the fishing is done by large mechanized vessels owned by a handful of people. There used to be a time when whatever amount of fish they catch, these fishermen were still slaves to the masters of the boats. No matter how good the catch was, it never made them flourish. Such was the case in most of coastal regions of India. But it's not the case anymore with the fishermen of Kannur. To bring a change in their status, Seva Bharati understood the need of the moment and promoted the use of community-owned fishing vessels. The organization and its well-wishers provided these fishermen with an interest-free loan for the basic capital to get these vessels and nets. Previously, laborers in these boats are now the proud owners. അതിൻ്റെ ഒരു തോണിയും പാലൻ്റെ ഒരു 18-അംഗ ഗ്രൂപ്പാണ് തലായിലിപ്പം ഈ തോണിയും പാലവും നമുക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 18, 20, 35, 40 ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനായിട്ട് സംഘടന തോണിയും പാലയും അനുവദിച്ചതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുന്നൊരു മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ലോൺ വഴി നമ്മളിപ്പം പൈസ ഇത്ര വലിയ തുക എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജപ്തി നടപടി പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് മുതിർന്നേക്കും. പക്ഷേ സംഘടനാ സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിൽ നിന്ന് വളരെ ആശ്വാസപരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കടലിൽ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വിഹിതം സംഘടനക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക. In a vast country like ours, they're given separate colonies to live in. Their land is specific, their water is reserved. They live with their own kind. This is not the life of the blue bloods, but life of the unprivileged, where life passes by in a painful blur. The bone starts melting away, reaching as far as the soul. Left behind is the hollow ghost of a distant life. Leprosy is a condition which literally feeds on the patient's mind, body and soul. Even if the leper fights the disease, the society won't let him. How are they supposed to have a normal life even if they are ready to fight the disease? The cure is available in abundance, but no one provides it. The cure is love. Bharatiya Kusht Nivarak Sangh is an example of the ideal society that defeated leprosy. It was a vision of Mr. Katre, who is a leper himself, but who refused to accept the hardships of this condition and decided to create a family for lepers to overcome the social boycott. There is no discrimination, and everyone lives with self-respect and dignity. Together, they build a society that provides enough employment, fields to grow their crops and vegetables. Their own chalk factories and carpet-making units
are a success. This initiative of Mr. Katre was supported and encouraged by Seva Bharati. Sushil Bal Graha is the school provided by Seva Bharati for all their kids, with all basic amenities. With modern medicine, 2,500 lepers have been saved from permanent disabilities, and 30,000 have been treated with MDT. शायद विश्व की एकमात्र संस्था होगी जो एक कुष्ठ रोगी ने कुष्ठ रोगियों के लिए प्रारंभ की। दो बातों से कुष्ठ रोगी बहुत त्रस्त है। एक तो जिसको भिक्षाटन नहीं करना है, तब भी मजबूरी में भिक्षा करना है क्योंकि पेट चलाना है, पर ये स्वाभिमान शून्यता है, ये भी वो अनुभव करता था, पर जाए कहाँ, उसके लिए स्थान कौन सा। दूसरी बात जो थी कि उसको हमेशा चिंता सताती थी कि जब ये शरीर शांत होगा उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। तो कात्रे जी ने सोचा कि अगर कुष्ठ रोगी को इन दो बातों से मुक्त करा दिया जाए कि वो एक स्वाभिमान जीवन जिए, भिक्षावृत्ति से परावृत हो, और दूसरा ये संसार छोड़ते समय निश्चितता संसार छोड़े कि अपनी व्यवस्था होगी। They don't have any family ties, but the ties of humanity bond them together, stronger than any other relations. They share their love, their life, and their pain with each other. Her touch heals all your wounds. Her love is the best medicine. Her hands help you to walk through every problem in life. Her eyes will look out for anything that can hurt you. Her smile will always welcome you home. You know you will always be loved in this world, as long as you have your mother. But not all are that fortunate. For all those kids who never knew what a mother can be like, there is Matruchaya. ये दो बच्चियां जो हैं, दोनों बच्चियां जुड़वा हैं, जो कि राजनांदगांव के पास में एक डोंगरगढ़ करके स्थान है, वहाँ पर इन्हें झाड़ियों में कहीं छोड़ दिया गया था। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कचरे में या रेत में या नालियों में डाल देते हैं बच्चे, तो उससे क्या है उनको इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और हम लोगों के लाते तक बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगता है। तो यदि किसी को डालना ही है तो वो हमारे मातृछाया के झूले में सही जगह पे डालें ताकि हम उसको इमीडिएटली उसकी व्यवस्था कर सकें। They never knew what mother's love and care means to a newborn. Matruchaya is an orphanage that takes care of all their needs, like a mother providing them the love and care. This orphanage is home and family to all these kids. While it provides them with affection and love, this organization also tries to find these kids a good family and home. In the process, Seva Bharati has brought light to all the childless homes and blessed these kids with families. 15 जुलाई 2004 से लेकर के आज तक 228 बच्चों का यहाँ पर आगमन हुआ है और लगभग मान के चलिए कि 160 बच्चों को उनमें से एडॉप्शन में दिया जा चुका है, योग्य दंपतियों को, जो कि बच्चे का पालन पोषण करने के लिए सक्षम है। கடன் கோரிக்கை திருமதி டி பகவதி அம்மா அவர்கள் நகை கடன் தீர்ப்பதற்காக ரூபாய் 50,000 கடன் கேட்டுள்ளார். தீர்மானம்
திருமதி டி பகவதி அம்மா அவர்களுக்கு கடன் கொடுப்பதற்கு உறுப்பினர்களால் ஒருமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது. குழுவின் வரவு சேமிப்பு 4000, வட்டி 4151, சந்தா 200, இதர வரவு 180, மொத்த அசல் 25,250, இதர செலவு லோன் அடைத்தது 13,500 ரூபாய். We see them everywhere, in multiple roles, maintaining multiple responsibilities. They stand tall even without their heels. They are omnipresent like the sunlight. They are superhuman. They are God's gift to mankind. Women. Seva Bharati is constantly at work to make these women realize their dreams. இது இருக்குதுக்கு இல்லடம் இல்ல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தது நெட்டாங்கோடு. அவங்க ஒரு 6 மாதம் போல் 1 வருஷம் போல் என் கூட இருந்துக்கிட்டு அப்புறமா அவன் வேற போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வேற போய் இருந்தாச்சு. எனக்கு ஒரு பிள்ளைய தந்துட்டு அப்புறமா அந்த பிள்ளைய கொண்டு வந்து வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துக்கிட்டு. Even those housewives who are illiterate or alone, they still have their willpower. Using this willpower, these women are taught various ways to make them self-reliant through the self-help groups. Seva Bharati started these self-help groups in Tamil Nadu in 1999. They provided employment and vocational training to all the women in the area. Those who needed financial help were provided with interest-free loans. They were taught how to make a living with all the readily available resources in the vicinity. These self-help groups are active all over the country. குழுவில் நாங்கள் 20 பேர் லோன் எடுத்து பங்குச்சு எடுத்துக்கிட்டு அப்புறமா நாங்கள் மாதம் தோறும் பிரித்து லோனு கட்டி அப்படி ஒரு தொழில் இப்படி வேலையில செய்து வாலியால் முடஞ்சி எடுத்து ஒரு தொழிலை செய்து எழுத்து விவரம் தெரியாமல் இருந்தால் அப்போ குழுவில் உள்ள தலைவர் மாரோ சொன்னாங்க, சுசீலா நீ இப்படி கை ஒப்பு போடக்கூடாது, நீ சாக்குட்டி வச்சு எழுதி படிச்சுக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொன்ன பிறகு என் மக என்ன செய்தா கையை பிடிச்சி எழுதி காட்டி தந்தா. அம்மா இப்படி எழுதுன்னு சொல்லி காட்டி தந்தா. அதுக்கப்புறம் 3 எழுத்து சுசீலா அப்படின்னு 3 எழுத்து எழுதி படித்து இப்போ சைன் வைப்பேன். புக்கில் எல்லா புக்கிலையும் சைன் வைப்பேன். அப்போ பேங்குக்கு போவேன். எப்படியோ குழுவில் எல்லாம் சேர்ந்தெடுத்து ஒரு பிள்ளை கரையாத்தன்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்தோம். நம்ம பாடு தானே, தின்னாட்டா என்ன குடிக்காட்டா என்ன, பிள்ளையாக ஒருத்தன் கையில் பிடிச்சி கொடுத்து நம்ம இது தானே. நமக்கு தும்பு ஓட்டிப்பான். மண்டே மார்க்கெட்டு பிளாக்கோடு. Through the chirping birds, through the gurgling sounds of the streams, with the whoosh of the dried leaves and twigs, through the sparkling stars, with the sound of the crickets, Mother Nature is trying to say something. The people who live in tune with Mother Nature belong to Kandhamal. 66% of this district is surrounded by dense forests. They have spent years amidst nature and developed a lifestyle suited to the natural surroundings. These tribes fend for themselves by growing rice, but the yield only happens once a year, only for a few months. For the rest of the year, the tribe is left to survive with struggle amidst the dense forests. tahi gule mana amila boda tini utpita mini tarbe melia date. Enga maya baru hingi aku go buta kateka be panangina oskite ka be pek jise kaluti kisia jibateru. Enga na mila boda ni podi bon pada tamu. Enga hingi na goh pimanji kalu hingi jananga siteka
mai mir hangote mange sila ba dergia teru aki besa tamki yesa tamki enggak masam supna. The biggest example of successful self-help group is found in Kandmal. The tribes who used to eat the mango seeds as their staple food, that tribe is the owner of a fully flourished business of leaf plates, and everything is handled by the women of the tribe. Ijo terapait gitam ketangguh hitam maseka. Maseku hitar be polo baro borso tina baro danju tina tam. Seria buti kuli ye sia sadisi isinga tebe mana 8 maso 9 maso se tinjinam. Seria mana soru sa sebe aku ronda tapinam hintara panau sainam nga adukan tani prapinganam. Seria soru bali trete kanebe ibta kanga aka ta kanga iman. Mila boda betin ba parbi manamu mila boda nebe ke podi gipki manamu. Nga kahe tara sakitini sakiamu ajanja patara saki. The machinery, equipments and marketing of these products is handled completely by Seva Bharati. Natural resources available in the vicinity and profit made by the businesses created out of it have enabled constant growth and steady development of these tribes. The art of handicrafts has always been a part of the cultural heritage of the native tribes in Arunachal Pradesh. To help them improve and develop their skills, Seva Bharati organizes regular workshops and training programs in bamboo handicrafts, which would help in raising the socio-economic status of the tribe. Mo kinto mane ngome Seva Bharati itanagar balo turning inom yamlango antai enna belongo bum ko bum pimanga idok ngok yenam bagde wak yenam ingo super set ati ai dek ke dem ngo inom hitoka idola hemgo ngok aum kolok ngo man hemgo bona hidong ko nelok ngo aregana midong idokom aregana dokka idol ngomur ko poisa pangko kamangai inam lega hemgo ailong muhilang kula ai ka ailok hok bango dolang kom ye muhilang hemme atau bona itu. India is an agricultural country. Every 3 out of 5 people in our country is somehow related to agriculture. We cannot look at farming and farmer as 2 separate entities. To educate the farmer in better techniques, to make the land more fertile and produce better yield, we needed a holistic approach. It was called organic farming. No chemical fertilizers or poisonous pesticides are used in this technique. Everything used for farming is made out of 100% natural raw materials. Seva Bharati has supported this in Gogram Swabalamban Sansthan. मैनेजर साहब बेटे आया यूँ समूह बनाए मैंने बताया राय बताई कि आप खेती इस तरीके क्यों करो जके हूँ आप पनप जाओला जने में एक आई है कि बहुत एक समूह बनाए जके हूँ मैं बीज तैयार करियो और खाद गऊ मंतरी गोबरी खेता में लार नौकी और मलसिंग करी नौ खेता में पल्ले कहीं को पड़ी नहीं 100 बीघा 50 बीघा में मतलब बीघो 5 किलो उतर दो या 10 किला यूँ बेसी बीघो मार धान छोड़ दो अब जब मैं आप मेहनत कर और खेत में खाद होता रहे जके टाइम माने बीघो मतलब इतने 80 किलो छोटे 8 या कुंटल रे पास हो जावे 1 बीघे में 1 कुंटल अनाज हो जावे गोबर ने और गऊ मंत्र जी की खाद है बटो बार करी और ला रखे खेत में नौ घर बीरे मलसिंग कर लो मलसिंग करने के बाद उरे ताकत हो आबाद री
Be it the sand dunes of Rajasthan to lush green terrains of South India, this organic farming is able to yield in abundance. Many such projects are being supported by Seva Bharati all over the country. Farmers are trained regularly in the organic techniques in the Krishi Prayog Parivar in Tirthahalli. They are trained in rainwater harvesting and creating their own natural pesticides. For such purposes, there is a monthly camp organized called Savayava Krishi Jagrati Shibir. So they were also trying to find out which botanical they can use, how they can manufacture their own pesticides. They call it as biopesticide also. We are covering nearly 1,58,000 acres throughout the state under organic farming. Now there are many farmers who are getting more yield in organic farming better than chemical farming also. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂದವಾಗ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹಾವಿದೆ, ಏಡಿದೆ, ಕಪ್ಪೆ, ಹಾವು, ಮುಂಗ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. Mother Nature never discriminates with us. All her resources are available at our disposal. But humans, over the period of time, have exploited and used all the natural resources for his own convenience and benefit. As a result, all the natural water resources like rivers and lakes are rapidly turning into gutters and sewers. To fight such restorations for the society, Rashtriya Seva Bharati has set up Lok Bharti. This organization keeps a check on the natural resources of cities. Local citizens have taken out time from their busy schedules to clean up the Gomti River of Lucknow. याच रस्त्यानं ज्यावेळेस आपण आता चाललो आहे, या ठिकाणी पण अनेक वेळेस बॉम्ब ब्लास्ट झालेले आहेत आणि हा रस्तासुद्धा एक मोठ्या मुश्किलीनं BROनं बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशननं बांधला आहे. रस्त्याचं काम करणारे कॉन्ट्रॅक्टर्स यांनासुद्धा धमक्या देण्यात येतात, मारण्यात येते आणि अनेकांना नक्षलवाद्यांची भीती वाटत असल्यामुळे या भागाने सरकारी कर्मचारीसुद्धा त्यांच्या ड्युटी असले तरी पण त्या ठिकाणी व्यवस्थित करत नाहीत. Gadchiroli is a Naxalite-affected area. One needs to cover a few miles before one reaches medicine or treatment for even the mildest of fevers. Even if the doctor wants to reach out himself, he can't be sure whether he will make it or not. A volunteer doctor who visits once a week is the only hope of treatment for these people. To change these bleak health and medicine conditions, Dr. Suresh Dambole started training the local people in basic medicines and treatments, so that the village gets the necessary care even if the doctor is unable to visit. Seva Bharati has supported and promoted such organizations and provided these local health workers with medical kits and equipments. याच्यामधूनच असं लक्षात आलं की आपण तर 8 दिवसातून इथं एकदाच येतो, मग उरलेले दिवस हे लोक काय करणार, औषधीची जर गरज पडली तर. मग अशा वेळेस लक्षात आलं की याच गावातले जर एखादा हेल्थ वर्कर, आरोग्यरक्षक जर आपण ठेवले आणि त्यांनी जर एक प्रथमोपचार म्हणून काही औषधी दिली तर 4-5 दिवस त्यांचे निघू शकतात. आणि मग आम्ही गावांमध्ये शीतल वेलादी झालं, मीना मट्टामी, मीना गोटा अशा त्याच समाजातल्या, माडिया समाजातल्याच काही महिला अत्यंत चांगल्या प्रकारे त्या काम करत आहेत. The Seven Sisters of Northeast
Their scenic beauty is unmatched, but the entire area is still underdeveloped. This part of the country has been neglected for a long time by the different governments, resulting in poor health and living standards. To improve these conditions, Seva Bharati has set up a health scheme here called the Arogya Mitra, Village Health Workers. Defining the true meaning of health for everyone, they teach the kids about basic hygiene and etiquettes. This has resulted into a progressive awareness about the importance of cleanliness and basic amenities in the village. All the Arogya Mitras are youth of the villages who volunteer for this program. They're all trained in basic medicine and treatment. An Arogya Mitra treats about 50 patients per month. To the villagers, Arogya Mitra is a health educator, a point of first referral, and a health counselor. 60% of all Arogya Mitras are women. This scheme provides the health services to the people by the people. Presently, over 4,500 Arogya Mitras serve over 900,000 tribals. In the past 15 years of constant progress, Arogya Mitra has spread from the northeastern region to the south of India as well. जोंहा बिनिफ्राय हस्पिटालाव लांनांगौब्ला जोङो 7 किल'मिटार 7 किल'मिटार लांनांगौ जायो आरो गसाइगावसो दालाय हस्पिटालाथ' आरो बिनिफ्राय जोङो बेसिम लांनांगौबा जोंहाथ' बहुत गोबां खस्थ' मोनो नालाय बे खस्थ'नि गेजेराव आङो बेखायनो बे गामियाव एसे एनै बेमारि दङ दा बेखौनो आं एसे एनै नायो आरोखि Uttarakhand is still trying to cope up with the natural calamity that struck in June 2013. Since the first wave of relief work started, Seva Bharati has set up medical camps and centers to provide primary medical facilities to the affected people. Many medical students and doctors volunteer in these camps from all over the country to help treat the patients. सारा शरीर दर्द जमजाट अच्छा ऐसी एक्सरसाइज करनी है डेली हाँ करना है ऐसा Touching all walks of life and reaching across all economic groups of society, encompassing all the regions like an umbrella, Seva Bharati protects and empowers millions of lives every day. Innumerable organizations originating from the roots of Seva Bharati have turned into a strong banyan tree. भारत माता की जय मोटी 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 महात्मा गांधी Everyone under these organizations work in unison, taking help from each other and making use of the naturally available resources. These people come together to achieve something new every day. What brings them together? It's the vision of self-reliance and independence. It's the dream they share as part
of Rashtriya Swayamsevak Sangh. Is a powerful thought process that brings all the members together every day for 1 hour. They all engage in different activities, and all these activities have just one aim: unity and selflessness, and the feeling that the nation is my own, and working for my nation selflessly is not only my duty, but my pleasure. NGOs often struggle for funding for finances, while RSS repairs a complete village on its own. Such is the power of unity. Brahmanchai village experienced such a restoration when a Shakha opened there in 1987. The village faced floods every year. To prevent the entire village from getting wiped out every monsoon, Swayamsevaks planted trees on the banks of the river to prevent floods naturally and bring about other social changes in the village. Swayamsevaks have renovated a time-worn temple and started a school for better education in this village. All across the country, RSS and Seva Bharati have taken up a lot of villages under the Sampoorn Gram Vikas project, including Brahmanchai. The Swayamsevaks are always available to help anyone in need, from construction of houses for the poor to repairing roads, even when resources are not available. All these people come together to bring a silent wave of self-reliance across the nation. तो संघ की शाखा में मिलने वाला एक सामान्य संस्कार समाज के प्रति अपनत्व का और समाज के प्रति कर्तव्य की भाव और सारे देश को एक मानना, और इसलिए समाज का सुख दुख ये मेरा सुख दुख है। समाज में आने वाली समस्याएं ये मेरी समस्या है। हम जहां पर खड़े हैं वही अपना देश है। हम जिनके बीच खड़े हैं वही अपना समाज है। चिंतन के स्तर पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान की सीमाओं से लेकर मणिपुर की पहाड़ियों तक देश है, परंतु कृति करने के लिए मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस मोहल्ले में खड़ा हूँ, जिस नगर में खड़ा हूँ, यही हमारा काम करने का क्षेत्र रहता है। इसलिए थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, इस सिद्धांतों को पूर्ण रूप से हम संघ की शाखा में स्वयंसेवकों को दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज आत्मनिर्भर बने, आत्मसम्मान से खड़ा हो, श्रेष्ठ जीवन की आकांक्षा उनके अंदर जागृत हो, इसकी आवश्यकता है। जो जीव है, चेतना युक्त प्राणी है, वो सम्मान की भूख रखता है। हम अपने सेवा के द्वारा उसके सम्मान की भूख को भी जगाना चाहते हैं। केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करना यह हमारा उद्देश्य नहीं कि जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय, इन भेदों से ऊपर उठकर हमने काम करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति संकट में है, उसकी सहायता करना यह अपना धर्म है। इसलिए अपने यहाँ पर चिंतन में जो कहा गया, सेवा यह परम धर्म है।